Hello everyone, welcome to iQuanta. My name is Nitin. I'm sure all of you are doing good. Guys, the sample paper of IIM Bangalore BSc has just been released. So we are here, to discuss all the important questions of different sections. In this video, I'm going to discuss the data interpretation questions, right? So without dealing any movement, let's start the first set. So guys, the first set which we have gotten is from tables. By the way, we had gotten two sets. Let me show you the second as well. The second set was from the pie chart. Combination of the pie charts, three pie charts, very good set, right? So we'll be discussing both the sets one by one. First, let's discuss the table one, right? So guys, in this set, there is a table as it is shown. They are also saying that consider the data of the four schools, S1, S2, S3, S4, you can see here, right? And they are giving, basically the number of students and the percentage of boys in this table, right? And we have four questions. Let's look at the first question, question number 1, 2, 3, and 4, right? Guys, if we read the questions once, एक बार पहले question अगर हम पढ़ें, तो पहले question में लिखा है the number of girls in 11 in this school S3 is approximately what percentage of the number of the boys in ninth class in this school 2. Okay, question number 2 says in class 12 the number of girls in the school dash is more than the combined number of the girls in the school dash and dash. Options are also accordingly on the basis of the schools, right? Third question says for all the schools the correct arrangement of the classes and ascending order of the number of boys is. For option last one, on arranging the schools in the descending order the total number of girls in all the classes, the correct order is given. So schools are given in fourth option, right? So guys, what we can do, right? The first thing if we can do is write down the number of boys and number of girls in each of the schools, right, in each of the classes. That will be easy in terms of solving each of the question, right? So that's why guys मैंने एक table यहाँ पे रखी है. In this table I'll do what? I'll write down the number of boys and girls in each of the classes in each of the schools. So let's start doing the same, right? So here I'll be writing the schools, right? So schools we have are S1 to S4, okay, S1, S2, S3, S4. And the classes we have from 9th to 12th, right? So this is the class 9th, we can write here. This is class 10, okay. Just a second. Let me change the color, right? So let's say this is class number 9th, guys, okay. Let's say this is the class number 10th. Let's say this is class number 11th, and let us say this is class number 12, right? Now we'll be writing the number of boys and girls in all of the classes, right? So let's say the boys particularly, okay. Let's do one thing, yeah. Let's write boys, girls here. I'll shift the schools, boys, girls, boys, girls, boys, girls, and boys, girls, right? Okay, let me shift these schools, right? One row down, okay. So S1 to S4, right guys? Fine. Now as I said, we'll be writing down the number of boys and girls in each of the schools, in each of the classes one by one. Alright guys. So look at this. In class 9 guys, school 1 में कितने students हैं? 120 है, जिसमें से boys का percentage हमें दिया हुआ है 40, right? So 120 का 40% is obviously 48. That means the girls should be 72. Number one thing, right? Then in the same school, if you talk about the class 10th, total students are 90, the percentage of boys is 30, so 30% of 90 is obviously 27. That means the girls have to be 63, perfect. Then class 11th, total students are 150, percentage of boys is 60, 60% of 150 is obviously 90. That means the girls have to be 60, all right. Then guys, in class 12th, in school 1, 125 students, boys percentage is 80%, 80% of 125 is 100. You can also do this, right? So the girls should be obviously 25. Similarly, guys, we can talk about the other schools, in all the classes one by one. Let's deal with school 2 first. So 9th में students है 150, जिसमें से boys का percentage is 30. So 30% of 150 is 45. So the girls have to be 105, all right. School 2 में 10th में total students हैं 100, जिसमें से boys हैं 55 और girls हो गए कितने 45. Simple, right? फिर स्कूल 2 में 11th में 120 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें बॉयज़ का परसेंटेज है 50. सो 120 का 50% है 60, यहाँ पे भी 60. सिंपल. S2 में 12th में टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, जिसमें से बॉयज़ का परसेंटेज है 45, तो नंबर भी 45 और गर्ल्स 55 ऑब्वियसली. सिमिलरली लेट्स डील विद द स्कूल नंबर 3. School 3, class 9, total students 140, boys 20%, which is 28. So remaining should be 112, which should be the girls. Class 10th, 120, 120 में 40% are the boys. So 40% of 120 is obviously 48. That means the girls should be 72, right guys? Now, 11th में total students are 100, जिसमें से boys in 65
Alright, so girls हो जाएंगी obviously 35, which you can say that. 12th में 120 का 60% means 72 should be the boys, and obviously 48 must be the girls over here, right? This is 72. Alright, simple. Okay guys, let's talk about the last school. S4 class 9th, 100 students, 35% is boys, तो boys 35 ही हो जाएंगे और girls 65. Class 10th में 100 student, again easy, so 45% means 45 boys and 55 girls. Class 11th में total students है 80, जिसमें से boys का percentage है 80, so 80 का 80% is 64, alright, and 16 should be the number of the girls, simple. Now the last class in S4, 150 students, 40% boys, which should be 60, that means the remaining 90 must be the girls. So this is how, guys, I wrote all the data of all these schools, all these classes, right? Now we can easily solve the questions one by one, right guys? So look at the question number 1. It says the number of girls in 11th in school S3 is approximately what percentage of the number of boys in 9th in school number 2. Alright, so girls in 11th in school 3. School 3, girls in which class, guys? 11th, right? So school 3, 11 में girls कितनी है? 35. We can just see that, right? Simple thing, 35. So they are asking that this is what percentage of the number of boys in 9th class in S2. So S2 में 9th में boys, right? S2 9th में boys हैं 45. So we just have to find out that 35 is what percentage of 45. Simple thing, right guys? So we can simplify this by 5. This will be 7 and this will be 9. We can say this is 7 into 1 by 9, obviously, and 1 by 9 everybody is nothing but 11.11% is this, right? Which we can further say as 77.77%. Alright, so this is how we can say the answer approximately. The best choice is option number D. Alright guys, pretty simple kind of question, right? So now move to question number 2 of the same set. Alright guys, question number 2 says that in class 12th, the number of girls in this schools is more than the combined number of the girls in this school dash and dash. Okay, so you can see यहाँ पे 3 blanks है, right? 1, 2 and 3. That's why in all the options there are 3 schools as well, right guys? 3 blanks हैं, इसीलिए सारे option में 3 schools दिए हुए हैं. So basically we have to check the options, right? We have to do the option checking. Question says what in class 12 the number of girls in the school dash, the first one, right, is more than, not equal to. बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में इसको equal to समझ के गलती भी कर सकते हैं, right? तो आपको सही से पढ़ना है, reading is very important. They are saying more than the combined number of girls in these two schools. Okay guys, so एक काम कर सकते हैं हम लोग, इन चारों स्कूल में क्लास 12th में जो भी गर्ल्स हैं वो तुरंत यहाँ पे लिख सकते हैं. पिछली स्लाइड में मैंने टेबल ड्रॉ करी हुई है, राइट? तो उसी से डेटा हम यहाँ पे लिख देते हैं. देखिए जरा, 4 स्कूल्स हैं, S1, S2, S4. व्हाट डू वी नीड? We need the number of girls of these school in class 12th, only in class 12. That's good actually, that's actually easy. So जल्दी से देखते हैं guys, class 12th की girls ये रही, right? So 25, 55, 48 and 90. Let's write this. 25, 55, 48 and 90. All right. 25, 55, 48 and 90. Let me cross check. Yeah, that's correct. Perfect. Now we just have to check which option is correct. So guys, let's do the option checking only, right? सिर्फ option checking करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं. Okay. So S2 में देखिए कितनी girls है पहले option में. S2 में है 55, right? तो होना क्या चाहिए? S2 should be more than the sum of the other two, right? Let's see if it is correct or not. S1 में है guys 25 और S3 में है 48. So you can clearly see 55 is obviously not more than the sum of this. This is much more than 55. We don't need to find the value. We can just observe whether it is more or not. So obviously this is not more. That means option A is definitely wrong. Okay guys, let's look at the option number 2 now. S4 में कितनी girls हैं? Option 2 में check कर रहा हूँ 90. Okay, S1 और S2 में कितनी है? 25 and 55. Guys, 25 and 55 का sum होगा 80. So yes, 90 is greater than 80. So we can say yes, option 2 works the best here, right? Let's take the other option as well quickly. Option 3 में S4 पहले है, which is again 90, okay? और S2 और S3 है, S2 is 55, S3 is 48. So you can see that guys, 55 plus 48 is more than even 100. So 90 से तो कम नहीं हो सकता, obviously. That means this option is also wrong. Let's take the last one, S2, S1 and S4. We don't need to check, but I'm just doing it, right? S2 is what? S2 is, you can say 55, and S1 and S4 will say 25 and 90. Obviously not correct. 90 is greater than all of them, right guys? So ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि option 2 will say is the best option for this particular question. Alright, let's try the next question now. The next question is what? Now they are saying here that for all the students, the correct arrangement of the classes in ascending order of the number of boys is, okay?
The question is about the ascending order of the number of boys, है ना guys? Let's read it again. For all the schools, right? सारे schools को मिला के the correct arrangement of the classes in ascending number of boys is. Okay. तो हमें हर एक स्कूल में क्या करना है? बेसिकली हमें हर एक स्कूल में नंबर ऑफ बॉयज़ एक तरह से आप कह सकते हैं क्लासेस के अकॉर्डिंग ऐड अप कर लेने हैं, राइट गाइस? मतलब इन क्लासेस में हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड कर लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑल द स्कूल्स, ठीक है गाइस? और फिर हमें इसको कंपेयर करना है। तो एक काम करते हैं, जो फर्स्ट लाइन में मैंने जो टेबल ड्रॉ करी थी उसमें हम सारे बॉयज़ ऐड अप कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द स्कूल्स, विद रिस्पेक्ट टू द क्लासेस, ठीक है गाइस? तो क्लासेस के रिस्पेक्ट में हम सारे बॉयज़ ऐड अप करेंगे सिर्फ, राइट? तो देखिए क्लास 9th में अगर हम सारे बॉयज़ ऐड अप करें, फिर 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में, देन वी कैन ईजिली कंपेयर the number of boys in all the classes combining all the schools, and we can answer the question as well. So let's do this quickly. Let's add the number of boys in class 9th combining all the class schools. So what is the sum, guys? Let's check that. See, 35 and 45 will give us first of all 80, all right? 80 and then 20 is 80 and 60 is 140. 140 and 16 will give us 156, right? तो क्लास 9th में टोटल स्टूडेंट्स हो गया 156. Similarly for class 10th, okay, 55 and 45 is 100 first of all, 160, 160 and 15, 175. All right. Similarly, let's check the next one. So 90 plus 60 is 150. 150 and 120 first of all is 270. 270 and 9 is 279. Perfect. Let's check the next one. Okay, guys, 100, 145, 145 and 60 is 205. 205 plus 2 is 207 plus 70 is 277. So close, isn't guys? This is so close. इसीलिए उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट calculation में mistake करें. Simple, right? So question was that we have to arrange them in the ascending order, not in the descending, in the ascending order. Ascending order means, guys, the smallest to the biggest, right? तो smallest number आप देखिए किस क्लास में था? smallest है क्लास 9th में, फिर है क्लास 10th में, फिर है 12th में और फिर है 11th में. So 9th, 10th, 12th and 11th should be the answer, right? 9th and then 10th. So first, this option is wrong. This option is also wrong. These two are correct, but this one is wrong क्योंकि third class होनी चाहिए 12th और फिर होनी चाहिए 11. Alright guys, so this is how we can deal with this particular question as well. Okay, now let's check the last question of this set. This one is saying that on arranging the school in descending order of the total number of girls in all the classes, the correct order is, right? Now, what they are saying, on arranging the schools in descending order of the total number of girls in all the classes, the correct order is, right? This time, guys, we have to arrange the schools, right? With respect to what? With respect to the number of girls, right? इस बार हमें schools को arrange करना है considering all the classes, right? सारी classes को consider करते हुए हमें स्कूल को अरेंज करना है with respect to, by the way, the number of girls, right? And in the descending order. पहले गाइस हम एक काम करेंगे, just like last question, जैसे हमने boys को add up किया सारे schools में, सारी classes में, right? Similarly, इस question के लिए हम सारी girls को add up कर लेंगे सारे schools में, ठीक है? तो 4 schools हैं हमारे पास. Let me go back to this table, right? तो सारे schools में हम girls को add up करेंगे combining all the classes. So let's start with the school number 1. Girls को add up करना है guys. So 72, 63, 60 and 25. This is what we have to add up, right? Okay, let's do that. First thing, 72 and 63 is, we'll say 135. 135 and 25 is 160. 160 and 60 gives us 220. So this is the number of girls, total number of girls in school S1. Similarly, let's talk about school S2. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 105 plus 45, 150. 150 plus 60, 210. 210 plus 55 is 265. All right. Let's talk about school S3 now. Similarly, so 112, 72, 35 and 48. Let's see that. So 72 and 48 guys अगर हम करते हैं तो 120 आ जाएगा, ठीक है? 120 और 112, right? 120 and 100 is 220, 230, 232. 232 में ऐड करेंगे 35. 35 भी बचा हुआ है. So 232 plus 5 is 237. 237 plus 30 is 267. All right. See, these two numbers are again very close, isn't guys? 265 and 267 being very close once again. Okay. Let's take school number S4 in a similar manner. So we can say what? It's 65 and 55 and 16 and 90. All right. So 65 and 55 should be 120. 120 plus 90 should be 210. 210 plus 16 has to be 220.
26. So this is how, guys, we just calculated all the girls in all the schools combining all the classes. All right, now let's do that. Let's just answer the question. Remember, they were asking the question in the decreasing order that time, right? Means we have to first write the biggest number and then the smallest in the end, right? तो guys, सबसे ज़्यादा girls कौन से school में आप देख सकते हैं? S3 में, right? तो S3 should be the first one, okay? S3 should be the first one, so option B, C and A got cancelled out, right? इसके बाद second number पे देखिए highest girls हैं किसमें? S2 में, right? S3 के बाद S2 में है, तो S2 means B and D both are correct so far. उसके बाद हाईएस्ट है किसमें? S4 में, और लास्ट में होगा S1, ठीक है गाइस? फिर S4 और फिर S1, मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी हमारा सही हो सकता है. इस तरह से गाइस हमने इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया. ओके, परफेक्ट. So I hope you guys got to understand and got to learn something. This question basically you can say this whole set was all about the calculation, right? आपकी calculation fast होनी चाहिए, फिर आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं. Okay, now coming to the second set, that is a good set, right? Because we have 3 pie charts, and yes, especially the last question is very good. Let's read the set first. They are saying there are the pie charts given below. Give the distribution of all the students in 4-year degree college as per their chosen area of the studies, the share of the student in each year, which is uniform across areas of studies. Guys, this line is very interesting. I'll tell you the meaning of this. Then they are saying, and the overall percentage of the boys and girls studying in the college, study the pie charts and answer the question given below on the basis of the information provided in these charts. All right, let's read it again. There are 3 pie charts. First pie chart is about the area of studies, distribution of the students according to the area of the studies, right? It's written as well, as per their chosen areas of studies. Second, the share of the students in each year, which is uniform across areas of the studies as well, and the overall percentage of the boys and girls studying in the college, right? Study the pie chart and then answer the question. Let's understand the pie charts one by one. Okay guys, देखिए ये जो first pie chart है, इसमें जो distribution है ना, वो दिया है in degrees, right guys? This is something we have to understand. They are saying what? The distribution of the students according to the areas of the studies, but in degrees. ये बहुत ही important है, right? यूजली हम लोग परसेंटेजेस में डील करते हैं, बट यहाँ डिग्री है. बट गाइस कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है. ओके, सी होता क्या है ना, पाई चार्ट में यू कैन से वन थिंग दैट 360 डिग्री इज व्हाट. See, 360 degree is the angle surrounding this point, simple, right? And if we, distribute in terms of percentages, then we say what? Sum of all the percentage share should be 100. That means, the sum of the degrees is 360 and sum of the percentages is 100, right? Similarly, we can also say that sum of the, fractions is 1, right guys? चाहे आप 360 डिग्री बोलो, चाहे आप 100% बोलो, या आप फ्रैक्शन में 1 बोल दो, ये सारी बातें क्या हैं? ये सब कुछ एक तरह से सेम ही है, ठीक है ना? अभी हम लोग ना इसको कनेक्ट करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चाहे तो आप परसेंटेज में क्वेश्चन सॉल्व करो या फ्रैक्शन में, एक ही बात है, ठीक है गाइस? लेट मी टेल यू हाउ. देखिए ह्यूमैनिटीज़ कितना है? 60%, राइट? सो अगर 360 डिग्री 100% है, राइट? तो आप ऐसे सोचिए जरा, ये जो 60 डिग्री है ना, ये क्या होगा? 60 डिग्री 360 का 1/6 है. मतलब जो ह्यूमैनिटी में स्टूडेंट्स हैं वो टोटल स्टूडेंट्स के कितने हो जाएंगे? 1/6, ठीक है? 1/6 भी बोल सकते हैं, और परसेंटेज में आप क्या बोलोगे? 100/6. सिमिलरली अगर 360 का 1/6 है तो परसेंटेज भी 100 का 6 हो जाएगा, 100/6. 100/6 को हम बोल सकते हैं क्या? 16.66 परसेंटेजेस. ओके गाइस, इस तरह से बेसिकली हम डील कर सकते हैं, राइट? बाकी सारे जो डिग्रीज हैं वो हम तभी मैं आपको तभी हम इसको डील करेंगे जब अगर ये किसी क्वेश्चन में पूछा हो. अदरवाइज गाइस अगर आप अभी से ही सारे फ्रैक्शन लिखोगे या परसेंटेज लिखोगे, दैट माइट जस्ट वेस्ट योर टाइम, राइट? विल बी डीलिंग विद देम ओनली व्हेन इट इज मेंशन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन. अदरवाइज क्यों इसको करें और टाइम वेस्ट करें, राइट? Similarly, second pie chart में क्या है? Share of the students in different years in degrees. Again in degrees, right? So देखिए 144 लिखा हुआ है, right? So guys, you can say what? If 360 is 100%, that means we can say one thing, that 36 degrees should be 10%, just 1/10 of this. And fraction में इसी को आप बोल सकते हो 1/10, okay? Depending on the question and data, we can use any one of them, right? चाहे percentage use कर लो या फिर fraction. Okay, let's get back to this. अगर guys 36 डिग्री 10% है तो देखिए 144 कितना होगा? 4 times of 36 डिग्री, right? So percentage भी कितना हो जाएगा? 4 times of 10.
that means it must be 40%. So guys, 144 degree is 40%. Similarly you can say 36 degree is 10%. ये actually थोड़ा सा आसान है, यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है, बट यहाँ बहुत ही आसान डिग्री में वैल्यूज दी हुई हैं जिसको हम इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट. 70 degree is double of 36, so 20%, right. Similarly 108 is triple of 36, so 30% is what you can say. Now जो तीसरा वाला है ना, लकली गाइस ये परसेंटेज में ही है ना, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑफ द स्टूडेंट्स. सो मेल क्या है आपका दिस कलर 62.5 और फीमेल क्या है 37.5, राइट. नाउ 37.5% is thrice of 12.5%, where 12.5% is 1 by 8. So we can say yes, this should be thrice of 1 by 8 means 3 by 8. And similarly this is 5 times of 12.5%, that means 5 times of 1 by 8, that means 5 by 8. Okay guys, now there was one more point which I did not discuss. It is what they are saying, this is the share of the students in each year which is uniform across area of studies, right. तो guys हर ईयर में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अगर आप स्टूडेंट्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ स्टडीज, तो उसका भी वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो फर्स्ट पाई चार्ट में दिया है. मतलब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर में आप देखो 40% स्टूडेंट्स हैं, राइट. इन फर्स्ट ईयर वी हैव 40% स्टूडेंट्स. नाउ इन दीज 40% स्टूडेंट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ स्टडीज विल बी द सेम. इसका मतलब फर्स्ट ईयर में भी गाइस जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से 60 डिग्री या 1/6 स्टूडेंट्स ह्यूमैनिटीज़ में हैं, 45 डिग्री स्टूडेंट्स या 1/8 स्टूडेंट्स साइंस में हैं, 120 डिग्री इसको आप इसे 120 या 1/3 स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो जो कॉमर्स में है, राइट. सिमिलरली परफॉर्मिंग में 27 डिग्री है और वोकेशनल कोर्सेज में 108 डिग्री या 30% स्टूडेंट्स हैं, राइट. मतलब हर ईयर में जो परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्टडीज़ है वही होगा जो फर्स्ट पाई चार्ट में हमें ओवरऑल दिया हुआ था, राइट. सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है इस पर्टिकुलर सेट में जिससे आप कुछ नया सीख सकते हैं. ठीक है गाइस, अब इसी बात पे आते हैं और क्वेश्चंस को टैकल करते हैं. ओके गाइस, शुरू के क्वेश्चन थोड़े आसान हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इज गिवन दिस and 15% of all the female students study in fourth year, then how many female students study in the fourth year? Okay guys, so let's read it again. Total student दिए हैं 15% of all females in fourth year. Okay, जितनी भी females हैं याद है आपको 3/8 of the total students वो fourth year में है. फिर बोला है कि how many female students study in fourth year. Total female कैसे निकाल सकते हैं guys? Total female निकाल सकते हैं हम लोग with the help of the total students into 3/8. Okay, और उन्हें बोला है कि 15% of all the females study in the fourth year. Okay, so not very difficult. The final question is to find the female students in the fourth year. Okay, so let me write this, right. Female students in fourth year. ठीक है guys, in fourth year. So remember we are given that in fourth year how many students are there, how many female students are there, 15% is right. 15% of all female students study in the fourth year. So we can say 15% of all the female students, right? Total number of female students. And how we can find the total number of female students? With the help of the total students, right? Remember guys, total college में, right? Female कितनी है 3/8, male कितने हैं 5/8, सब मिला के, right? So ये distribution क्या रहेगा guys? ये distribution हम यहाँ पे भी use कर सकते हैं, right? तो total female कितनी हो जाएंगी? Let's continue this. 15% of the total female students. Total female student is 3/8 of the total students, and total students are given 43,200. Okay guys, so let's just calculate this thing. Okay, by the way 15% we can also say as 3/20. Okay guys, 15% को हम fraction में बोल सकते हैं क्या 3/20. So in the end we just have to do the calculation things, right? Nothing much. हाँ, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई जरूर कर सकते हैं. देखिए गाइस 20 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा. 20 को आप डिवाइड करेंगे पहले तो 0 कैंसिल हो गया. 2 से करेंगे तो कितना आएगा? We can say 2160, right? Now this 2160 can be divisible by 8. Okay, so 2 2s are 16, then 56, 8 7s are 56, and then 0. So in the end we have 270 into 3 into 3. Okay guys, in the end we just have 270 into 3 into 3, which is 270 into 9. Now once you calculate what it should be, right, you can say 27 into 9 into 10. Okay guys, now 27 into 9 you can say 27. Okay, you can actually do like this, 27 into 3 into 3, that might be easy. So 27 into 3 is 81, 81 into 3 is 243, 243 and one more 0, so we can say 2430, which is option number B,
should be the answer for this particular question. Alright guys, I hope you understood this, right? And alright. Alright, sorry. Let's move to the next, set then. Okay, next question then. The next question is about, now they are saying what? They are saying the total number of students in the college is this, and 5940 of the students in the first year are females. Okay, total students कितने हैं इस बार 39600 और 5940 students फर्स्ट ईयर में क्या है फीमेल्स हैं. ठीक है, हमें चाहिए what percentage of all the females study in the first year. What percent of the all the females मतलब we have to calculate this with respect to the total females. Okay, total females हम निकाल सकते हैं यहाँ से और total students है, right? But how can we calculate the females in first year? Okay, so guys, luckily we are given this number, we are given that 5940 of the students in the first year are females. That's it, right? So what we have to just do, right? First thing, let's calculate the total number of females, right? So what it should be, total number of females we can say is what? Total number of females is 3 by 8. Remember we did it in the first diagram. 3 by 8 are the girls, right? So 3 by 8 of the total students, and total students are given 39600. Okay, 39600. Fine. Now the final thing is what? We just have to find out that in first year kitni females ka percentages hai, right? You have to find out the percentage of the females in the first year. Simple. Okay, what percent of all the female students study in the first year, right? So guys, what basically have to find, let me write that. Required percentage is what? The required percentage basically kya hai? Females in the first year, right? Females in first year divided by total females. Okay, just a second guys. Okay, so female in the first year divided by the total females in this particular, college, right? Okay, female in first year is given to us how much? 5940. Okay, and female in total female in the college, we just wrote here 3 by 8 of this. I have not calculated guys, usually we should try that we do not calculate everything in the beginning, right? सबको last line तक लेके चलेंगे, just like a good finisher, right? Let's deal things till the last line. Okay, पहली लाइन और दूसरी लाइन में सब कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम चीज़ों को लास्ट तक लेके जाते हैं नंबर्स को, तो आखिरी में बहुत कुछ कैंसिल हो जाता है. तो आपको सब कुछ शुरू से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली द डिफिकल्ट नंबर्स, डेफिनेटली नॉट, राइट? ओके, सो 5940, आई टुक 8 टू द न्यूमरेटर, राइट, and 3 will be to the denominator. Simple. Okay, now let's look at this. So if you look at this, 1 0 I can cancel here, right? 1 0 cancel हो गया. फिर देखिए guys, 3 से ये definitely cancel हो सकता है. देखिए जरा, 3 1s are 3 and then 9s are and then 24 means 8s are, right? अब देखिए 198 2s is 396, that went very lucky, right? 198 2s is 396, that means it should be 20. So finally we are left with, just 8 by 20. Okay guys, 8 by 20, you can say 4 by 10, and 4 by 10 means 2 by 5 means 40%. That's nothing but 40%. So this is how we can say the answer has to be 40%, is option number C. Okay, so this is how we can do this calculation, right? जैसे मैंने बोला, शुरू से calculate मत कीजिए, आखिरी तक लेके चलिए, कुछ ना कुछ easy जरूर हो जाता है, ठीक है? Okay, now let's move to the next question number 3 of this set, right? So guys, question number 3 says what? Okay, let's see. There are 12960 students who are studying vocational courses in the college. Okay, fine. A quarter of all the female students study in the second year of the college. So total female का quarter means 1/4 second year में है, ठीक है? How many male students study in the second year in the college? Okay. तो गाइस पहले देखिए वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, विच मीन्स इज दिस 108 डिग्रीज, और यू कैन से 30% इज 36 3s are, राइट? सो 30% अगर वोकेशनल स्टडी पढ़ रहे हैं तो हम टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. और एक बार टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो यहाँ से हम टोटल फीमेल्स निकाल सकते हैं, और एक बार अगर टोटल फीमेल्स आ जाएंगी तो हम सेकेंड ईयर की फीमेल्स निकाल सकते हैं. फिर भी हमें चाहिए सेकेंड ईयर के मेल्स, राइट? उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, और फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स से सेकेंड ईयर के फीमेल्स को सब्ट्रैक्ट करके सेकेंड ईयर के मेल्स भी निकाल सकते हैं, राइट? थोड़ा कैलकुलेशन है बट डूएबल है. ओके गाइस, सो लेट मी डू दिस वन बाय वन. फर्स्ट थिंग इज व्हाट, वी हैव टू लुक एट द total number of students in the college with the help of the students who are learning vocational courses. Okay, so in vocational courses, if you write it, right, what shall we get here, right? So vocational courses guys देखिए जरा कितना है 108. तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था
कि 360 degree is equivalent to what? 100% is, right? That means 36 degree is equivalent to what? 10% is. That means triple of this, which means 108 degree is triple of this, that means 30 degree, right? 30% is. So we can say 108 degree is equivalent to 30% of, the total students, right guys? 30% of total students. So with the help of this, as I said, we can calculate the total number of students, okay? All right, so vocational are given how many, by the way? They are given 1, 2, 9, 60. All right, 30% is, you can say 3 by 10, okay, of total students. So the total students must be, let me write in the next slide, okay. So guys, the total students we can say are 12960, okay, into 10 by 3. Fine, we got this data, total number of students, in the college. Now, remember I said what? If you have to find total number of males in the second year, we will do what? We'll subtract the total females in second year from the total students in the second year, okay? So, second year females, second year males, we can say what? Must be, second year males must be total second year students, right? Minus the second year females, right? Second year females के बारे में we have a data. What the data do we have, guys? They are saying in second year, 1/4, 1/4 of all the females are studying, right? So we can calculate them easily actually, right? How can we do that? Let me show you. Okay, total second year student भी हमें नहीं पता है और एक तरह से, second year के females भी नहीं पता है, but yes, we can try to do this. कैसे guys? देखिए पहले हम ये निकाल लेते हैं कि टोटल फीमेल्स कॉलेज में कितनी है ना, टोटल फीमेल्स कितनी है कॉलेज में, वी कैन से 37.5%, विच मीन्स 3/8, ठीक है. सो टोटल फीमेल्स में यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार, राइट. टोटल फीमेल्स इज 3/8 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ऑलराइट. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं गाइस? टोटल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं 10/3 ऑफ दिस, राइट. 10/3 ऑफ 12960. तो सेकेंड ईयर में फीमेल्स कितनी हो जाएंगी? रिमेंबर 1/4, ओके, मीन्स 1/4. तो सेकेंड ईयर की फीमेल्स को गाइस मैं यहाँ लिख लेता हूँ, राइट. 1/4 of the total females, and total females we can say is 3/8 of the total students, and total students are 12960. Simple. अब सेकेंड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? गाइस सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स निकालने के लिए विल यूज अ पाई चार्ट नंबर 2, राइट. Look at this. In second year, how many students are there with this color? 108 degree. 108 degrees again, 30 percentages, right? We can say this is again 30 percentages, means we'll say 30% of the total students. Alright guys, 30% of the total students. By the way, 30% of total students are what? If you guys remember, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि total students का 30% निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं. Remember guys, vocational वाले भी तो 30% of total students ही तो थे ना, right? तो vocational का number will be equal to the students in the second year, right? Which means 12960. Okay, so we can write this 12960. If you don't want to do like this, if you don't remember like this, so आप ऐसे भी कर सकते हो. 30% of total students are this. ठीक है, 30% मतलब 3/10, 3/10 और 10/3 cancel हो जाएगा और फिर से 12960 ही आएगा, right? So finally we have 12960 minus this. यहाँ पे भी देखिए 12960 है, इसीलिए मैंने बोला था कि कैलकुलेशन हमेशा लास्ट लाइन के लिए रखिए. हो सकता है चीज़ें आखिरी में जाके सिंपल ही हो जाए, जैसा कि यहाँ हो रहा है, ठीक है ना गाइस. अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, 1/4 इंटू 3/8, जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से क्या. ओके, आई होप एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर, राइट, सो फार. वी हैव टू फाइंड व्हाट? Second year we have to find the males, right? And a quarter of female is this. ठीक है, female का percentage क्या है? We can say 3/8, right guys? So 3/8 and this we can say is 3/32, right? This should be 3/32. I hope I'm not missing anything, right guys? Second year के students, okay, total students क्या थे? 1960 into 10/3, that's I just missed it. So second year के students में हम क्या करेंगे गाइस? सेकंड ईयर के स्टूडेंट निकालने के लिए, सेकंड ईयर फीमेल निकालने के लिए 1/4 ऑफ द टोटल फीमेल, एंड टोटल फीमेल इज 3/8 इंटू टोटल स्टूडेंट्स, एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 12960 इंटू 10/3, राइट. आई जस्ट मिस राइटिंग दिस 10/3. ऑलराइट, नाउ यू सी 1/4, 3/8 और 10/3 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे कि 12960 हमें सेम टू सेम मिल जाएगा, राइट. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना गाइस. सो इफ यू डू दिस, 3 पहले तो कैंसिल हो गया, गुड, राइट. Now we have 10 upon 32. Alright guys, 10 upon 4 into 8 is 32. 10 upon 32 we can also say 5/16 by the way. So let's take 12960 as common, right?
यहाँ पे आएगा 1 minus we can say 5 by 16, right? So 1 minus 5 by 16 we can also say as 11 by 16 into 12960. So that is the last calculation which you have to do, last and only calculation, right guys? Usually students क्या करते हैं, हर लाइन में calculate करते हैं, हर जगह calculate करते हैं, but मैंने सिर्फ एक लाइन में calculation रखी, right? So this is how you can also do the things and make the process much easier. Okay guys, I hope you understood this. Okay, so 12960 upon 16, we should cancel this. 16 8 is 128. Yes, it is, 80 plus 48, yes. 1 is the carry, 16, 16 ones are 16 and 0. So 8, 1, 0 into 11, that's it. So we can say 8, 1, 0 into 11 should be what? 8100 plus 810, so 8910, right guys? 8910, look at this, which option is this? It is option number 1. All right, so perfect. This is how we can make this calculation, easier. Okay, now let's look at the last question of the set. And guys, I have told you that this is the best question of this set, right? Because this is the only question जिसमें याद है आपको ये जो point दिया था, just this will be also used. Okay, let's see what is it, what do we have to do in this question. All right, the question is saying, just a second, right? Okay, the question is saying that the total number of students in the third year of the college is this. Okay, if 6% of all the female students in the college are third year science students, then how many male students in the college study science in the third year? Okay, so you see that in a particular year they are asking the science student. Okay, so यहाँ पे ही ये distribution वाला point काम आएगा, है ना guys? Distribution around the distribution of the students on the basis of the area of the study, right? यहीं पे ये काम आ सकता है. Let's read it again. Total students in the third year is given. Okay, fine. इसके help से हम total students पूरे college के निकाल सकते हैं. फिर बोला है 6% of all the females in the college are third year science students. Then how many male students in the college study science in the third year? Okay. Guys, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए male students in third year studying science. Okay. So what can we do? Let me show you this, right? Let me write here. Third year की बात हो रही है. Third year में हमें चाहिए क्या? वो student जो male science है ना? So ये कैसे निकाल सकते हैं? Third year के total students माइनस थर्ड ईयर के फीमेल साइंस स्टूडेंट्स. ओके, थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स माइनस थर्ड ईयर के फीमेल साइंस स्टूडेंट. अब गाइस, अगर हमें थर्ड ईयर के मेल स्टूडेंट चाहिए, जैसे कि हमने देखा, तो हमें दोनों नंबर निकालने पड़ेंगे. थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स, राइट, ये थर्ड ईयर में हो रहा है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट. थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स माइनस थर्ड ईयर के फीमेल साइंस स्टूडेंट्स. ओके, तो ये कैसे होगा? देखिए, हमें क्या क्या दिया है. हमें थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, जिससे पहले हम टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं. ओके गाइस, थर्ड ईयर में फीमेल का देखिए जरा, थर्ड ईयर में साइंस का क्या परसेंटेजेस है. ओके, सो थर्ड ईयर में क्या, इनफैक्ट सॉरी ईयर वाइज देखना है. फर्स्ट थिंग, थर्ड ईयर में टोटल स्टूडेंट दिए हैं, राइट गाइस. सो थर्ड ईयर का देखिए, ग्रीन कलर 72 डिग्री is 20% because 36 degree is 10%, so 70 degree has to be 20%, right? Number one thing. So first thing we can say what is third year students should be what we can say 20% of the total students, right? And guys, 20% is nothing but we can say 1/5 of the total students, right? So, and third year students are given how many? We can say 11520. Okay, so यहाँ से total students आ जाएंगे. Total students in the whole college, we can do the cross multiplication. So it should be 5 into 11520. Okay, number one thing, the total students came to be in this college is 11520 into 5 according to this data. Okay, now they're saying 6% of the all female in the college are third year science. Okay, 6% of all the females. So we can find the females first, right guys? Females कैसे निकालेंगे ना, याद है आपको, females total college में कितने होंगे? 37.5%, which is 3/8. That means 3/8 of the total students, alright? और total students हमने यहाँ से निकाला है क्या? देखिए जरा, 3/8 into total students is 5 into 11, 520, right? अब उन्होंने बोला है कि उसमें भी 6% फीमेल ऐसी हैं जो थर्ड ईयर में साइंस पढ़ती हैं, है ना गाइस? So finally we can calculate or simplify the third year female students who are studying only science. So we can directly write it here. In third year female science student, we can say is what? 6% of the total females, and total females are here, right? So 6% is of this. 6% of what? 6% of 3/8 into 5
into we have 11,520. Okay guys, so third year की फीमेल साइंस स्टूडेंट हमारे पास आ चुकी हैं. अब हमें चाहिए थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स. ओके गाइस, अब ये कैसे निकाल सकते हैं, राइट? वी हैव टू फाइंड दी थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स, राइट? सो वी कैन डू वन थिंग गाइस, थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स अगर हमें चाहिए, है ना, थर्ड ईयर के टोटल स्टूडेंट्स अगर हमें चाहिए, so that is actually given to us, isn't it? That is given to us how much? 11,520, right? Okay, so third year के total students हो गए हमारे पास कितने? 11,520, right? So what shall we do here? Just a second. Third year, right? We need a third year के female science student, which is this. Okay. Right. Okay. So okay, one more thing, guys. We have to do one thing. What? We cannot do like this. We have to subtract, क्योंकि हमें थर्ड ईयर में कौन से स्टूडेंट चाहिए? मेल साइंस. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो थर्ड ईयर में टोटल साइंस स्टूडेंट्स है ना, उससे हमें फीमेल साइंस स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना है, ऑब्वियसली, राइट? वी डोंट हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ थर्ड ईयर, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द टोटल साइंस स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड ईयर, राइट? सो व्हाट इज द टोटल साइंस स्टूडेंट्स ऑफ द थर्ड ईयर? दैट इज समथिंग विच यू हैव टू फाइंड इन द एंड, राइट? वो कैसे कर सकते हैं? देखिए जरा, थर्ड ईयर के टोटल साइंस स्टूडेंट्स चाहिए, है ना? सो थर्ड ईयर में टोटल स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी पता है गाइस, कितने हैं? 11,520. बट हमें चाहिए थर्ड ईयर के साइंस स्टूडेंट. अब याद है ये जो मैंने बताया था पॉइंट विच वी हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन, व्हाट इज दिस गाइस? द शेयर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ईच ईयर इज गिवन which is uniform across the area of the studies as well, right? तो जो total students का distribution है ना, according to the area of studies, वो हर एक year में भी valid होगा, right? So third year में भी वही share होगा जो total college का share है, okay? So देखिए जरा, साइंस की बात हो रही है, साइंस का परसेंटेजेस याद है आपको, साइंस है 45 डिग्री, ओके? तो ये 45 डिग्री को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं गाइस? ओके, तो देखिए जरा, 360 डिग्री मैंने आपको बताया था कि आप फ्रैक्शन में बोलिए या परसेंटेज में. इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन में यूज़ करना विल बी ईजियर एक्चुअली, क्योंकि 45 डिग्री क्या होता है गाइस? 45 डिग्री वी कैन से इज 1/8 ऑफ 360. यू कैन ऑब्जर्व दिस, 45 इज 1/8 ऑफ 360. सो फ्रैक्शन में हो जाएगा कितना? You will do 1/8, so this will be 1/8. Percentage में you can say 12.5, but ultimately use तो हम fraction में ही करेंगे, है ना guys? तो हम बोल सकते हैं कि हर एक ईयर में, क्योंकि टोटल कॉलेज में साइंस का फ्रैक्शन है 1/8 या परसेंटेज है 12.5, तो हर एक ईयर में भी साइंस का इतना ही फ्रैक्शन या परसेंटेज होगा, ठीक है ना गाइस? तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड ईयर में साइंस के स्टूडेंट्स कितने होंगे? वी कैन से 1/8 of the total students in third year, right? And what is the total students in third year, by the way? The total students in third year, we know 11,520. So we can just use this, right? And then we just have to do some, calculation to get the answer. Simple. Now guys, you can see 11,520 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. Probably this will be helpful again. Let's see that 6% guys, fraction में आप बोल सकते हैं कितना? 6/100 या फिर 3/50, कुछ भी बोलना चाहें, राइट? इंटू 3/8 इंटू 5 इंटू 11,520. ओके, तो 11,520 छोड़ के अगर मैं सब कुछ सिंप्लीफाई करूं तो देखिए क्या मिलेगा. देखिए गाइस, 5 10 is 50, सिंपल. अब 10 तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना गाइस? 1/8 भी इनफैक्ट कॉमन है, तो कहीं ना कहीं गाइस थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा. अगर हम कैलकुलेशन करके देखें, देखिए 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट? 8 से क्या ये कैंसिल होता है? तो देखिए क्या मिलेगा? 8 1s are 8, 35, 8 4s are 32, and again 144. Okay, again 4 means 144. So same thing will happen here, क्योंकि ये भी 11,520/8 है. So this should be 1440, right? One more 0. So we can say this is 1440 minus ये कैंसिल हो गया. So we have 3 into 3 into, in the end we have 144. Okay guys, इतना बचा हमारे पास. तो कुछ खास नहीं है गाइस. देखिए ये 144 टेंजा है ना, और ये 144 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 9 है. ओके, सो देखिए 144 हमने फिर से यूज कर ही लिया, राइट? So this is what I was saying. Do not calculate everything. Go with the steps, right? Leave the things till the end, I would say, right? And in the end, you can get the easy simplification, right? Okay, just like this. So answer should be 144, which is option number A, right? So guys, this is how we can solve this wonderful set as well. Okay. So this is where we can say what we have discussed. Everything in this sample paper about the data interpretation. I hope you guys got to learn something which is much more important, right? हो सकता है आप ये क्वेश्चन, शायद कुछ क्वेश्चन आप खुद से नहीं भी सॉल्व कर पाए हो, बट ये सोल्यूशन देखने के बाद होपफुली आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा और उसको आप एक्चुअल पेपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.
Okay, guys, thank you so much for watching this session. All the best for your exam. Bye bye. Take care.